Bismillahirrahmanirrahim. Chairperson, Sindh Higher Education Commission, Professor Dr. Tariq Rafi. Chairman, Chartered Inspection and Evaluation Committee, EGC, Dr. Sarosh Lodi. Honorable Consul General of Turkey. Secretaries, respected Vice Chancellors of universities, distinguished academics, healthcare experts, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's indeed a privilege for me to address this distinguished gathering on a topic of vital importance. The theme, sustaining health gains through policy innovations, is not only timely, but essential for future of our province and the country. I begin by commending the establishment of Directorate of Strategic Planning at Sindh HEC, an initiative full of promise. One of its primary objectives is to form thematic think tanks focused on main sectors like healthcare, education, and agriculture. These think tanks will unite experts to develop practical, actionable recommendations. Let me assure you that the government is committed to seriously considering these recommendations to enhance policy and improve outcomes across Sindh. I also want to acknowledge the leadership of Sindh Higher Education Commission. Your dedication to strengthening research, fostering collaborations, and linking universities with healthcare sector and industry partners is evident in your successful initiatives. Collaborations such as those with FPCCI, job fairs, and joint project highlights the immense potential of public-private partnership in fostering innovation, technology adoption, and sustainable development. Sindh's healthcare has achieved remarkable milestones, from maternal and child health programs, advanced cardiovascular care, cancer treatment, organ transplants, and robotic surgery to emergency services. These successes demonstrate what relentless commitment and strong partnerships can accomplish. However, to sustain and further these gains, we must focus on three priorities. First, evidence-based policy. It is imperative that research and data from universities, institutions, and industry drive our policy decisions. Second, human resource and leadership. A resilient healthcare system depends on highly skilled professionals and visionary leadership. Programs by Sindh HEC in faculty development, leadership training, and postdoctoral support are instrumental in preparing the leaders of tomorrow. Third, collaboration. The most impactful outcomes arise when education, healthcare, and industry, local governments, and technology partners work in unison. The forthcoming think tanks will be crucial in generating informed recommendations, which the government will diligently evaluate for implementation. As we advance, we must build healthcare systems responsive to the evolving demands of our world. Modern healthcare is no longer confined to hospitals and equipment. It is defined by information, technology, skilled human capital, and dynamic partnerships. Sindh possesses the talent and institutional capacity to lead in these domains, and it is heartening to witness our universities, industry partners, and healthcare institutions already collaborating on meaningful initiatives. I eagerly anticipate the Directorate of Strategic Planning commencing the formation of these think tanks. I emphasize that the recommendations will be met with earnest consideration. Ideas have value only when they translate into tangible results. I expect these think tanks to present realistic, forward-looking proposals grounded in Sindh's unique realities. The government will collaborate closely with Sindh HEC and other stakeholders to evaluate and integrate recommendations
that strengthen our healthcare ecosystem. My aspiration is simple yet profound. Every citizen should experience a system designed with them in mind. Whether it's a patient seeking care, a young graduate entering the workforce, or an industry partner driving innovation, they should find a responsive government and a proactive education sector ready to support their needs. With the enthusiasm and vision presented here today, I am confident that Sindh is advancing towards a more capable, connected, and future-ready healthcare system. Before I end my speech, I just want to say a few words in Urdu. मैं बहुत इधर आके मेरे लिए बायस फ़ख्र है कि मैं इस इवेंट में आज शिरकत कर रहा हूँ और इस टाइप के इवेंट्स और ख़ास तौर पे सिंध हाई एजुकेशन कमीशन और डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ने जिस इवेंट का अहतमाम किया और जो मुझे बताया गया है कि इसके बाद सीरीज़ ऑफ इवेंट्स अदर सेक्टर्स में भी आप काम करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंडस्ट्री, एकेडेमिया और रिसर्च इन सबको मिलाया जाए. एकेडेमिया में रिसर्च ही होती है और दुनिया भर में इंडस्ट्री लीड करती है डिमांड को और वो डिमांड एकेडेमिया में देती है जहाँ पे रिसर्च हो सके. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली तो हमारी एकेडेमिया स्ट्रॉन्ग है और उनके पास पोटेंशियल है. हमारे पास ख़ास तौर पे अभी इन द लास्ट 30-40 years इधर बिठा दें. हमने काफ़ी तरक्की की है बट इंडस्ट्री उस पेस से मेरे ख़्याल से नहीं गई वो डिमांड क्रिएट करने के लिए और इसी वजह से हमारे क्वालिफाइड लोग बाहर जाने की सोचते हैं और फिर वो बाहर जाके वो सब कर सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी उन्हें इधर नहीं मिल रही. सो आई वुड लाइक कि इस तरीके के और इवेंट्स हों और जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक़ है हम हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं. इस टाइप के इनिशिएटिव चाहे वो एकेडेमिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में. और हम हेल्थ केयर की आज बात कर रहे हैं, मैं सामने डॉक्टर बारी को देख रहा हूँ और हमारी जो पार्टनरशिप इंडस हेल्थ नेटवर्क के साथ है, इंडस हॉस्पिटल के साथ, आई एम वेरी प्राउड टू से कि सिंध हुकूमत इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क के बिगेस्ट पार्टनर है फाइनेंशियल टर्म्स में जो हम करते हैं. काम इनकी मेहनत इनकी है लेकिन जहाँ पे भी इनको सपोर्ट की ज़रूरत थी कोशिश करते हैं कि वो हम सपोर्ट करें. इसी तरीके से और इदारे हैं हमारे अपने जो इदारे हैं, जिना अस्पताल, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के एग्ज़ाम्पल है. वहाँ पे पिछले 10 साल में जिस तरीके से उसको हमने एक्सपेंड किया और हम कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं. अभी 3-4 दिन पहले सिंध हुकूमत ने कैबिनेट में $15 million की ग्रांट इन द नेक्स्ट 2 years उनकी अप्रूव की है. और वो कैसे की है, वो क्यों की है, इसलिए कि वो एक इमरजेंसी टावर बनाना चाह रहे थे और $35 million का उन्होंने एस्टिमेट किया था ख़र्चा और जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और पेशेंट एड फाउंडेशन ने मिल के $20 million ऑलरेडी अरेंज कर लिए थे. सो उसके बाद हमारे लिए वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में पार्टिसिपेट करना बहुत आसान हो जाता है. इसी तरीके से कई और एग्जांपल्स हैं. आई कैन गो ऑन एंड ऑन, नॉट ओनली इन दी हेल्थ सेक्टर, मैं सर्विस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा है. इन दी सर्विस सेक्टर एजुकेशन के अंदर हमारी जो पार्टनरशिप्स हैं, USAID हैज़ बिल्ड स्कूल्स फॉर अस, हमें जायका ने स्कूल्स बिल्ड करके दिए हैं. उनको चलाने के लिए हम एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को शॉर्टलिस्ट करके और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क में उनको भी साथ ला रहे हैं. तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि इधर मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर पे जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स बैठे हुए हैं और हेड्स बैठे हुए हैं. उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेट करें. आपका तीसरा पार्टनर हुकूमत सिंध हमेशा अवेलेबल रहेगा और इंशाल्लाह ताला ये जो आज की आपकी नशिस्त है, मैंने उसकी देखी है सारी
جو پروسیڈنگز ہونی ہے پالیسی ہیلتھ کیئر پالیسی میکنگ میں یا نرسنگ جو کہ ایک مین ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر کیا انٹرونشنز چاہیے. میں آپ کو اشور کرتا ہوں سیکرٹری ہیلتھ ادھر بیٹھے ہیں اور ہمارے سیکرٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈ سیکرٹری آئی ٹی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سندھ ہر طریقے سے اس لیے کہ یہ آپ سب ہمیں مل کے ہم نے اس صوبے اور اس ملک کے عوام کے لیے ایک بہتر ایجوکیشن فیسلٹیز بہتر ہیلتھ کیئر بہتر ایک بہتر ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ ہمارا ٹیلنٹ خاص طور پہ یہ ملک چھوڑ کے نہ جائے اور یہیں پہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. میں ایک بار پھر سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈائریکٹر آف اسٹریٹجک پلاننگ اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب یہ سارے اتنے ٹیلنٹڈ لوگ اتنے ڈسٹنگوشڈ لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی جو پروسیڈنگز کی آئیں گے ریزلٹس اس سے ہم سب فائدہ لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.